पहले मीडिया शुरू कर दिया है कि ये देखिए इनके उमर खालिद और बाकी शर्जिल इमाम के खिलाफ मिला सबूत, और वो चला दिया, स्टोरीज चला दिया। स्टोरीज का एविडेंस था पुलिस कस्टडी में किया गया स्टेटमेंट, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। एक ही चीज निकल के आती है कि ये सारे फोटोज है, ये सारे लोग आज जेल के पीछे हैं क्योंकि इन्हें साइलेंस करने का एक पूरी तरीके का कोशिश चल रही है। उमर अरेस्ट हुआ था 13 सितंबर 2020 को, पर हम लोगों को पता था कि वो अरेस्ट होने वाला है बैक इन मार्च 2020। तो मार्च 2020 में क्या हुआ कि अमित मालविया जो आईटी सेल का हेड है बीजेपी का, उसने एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट किया कि अमरावती में उमर ने एक स्पीच दिया था राइट्स की 7-8 दिन पहले, उसका 40 सेकंड्स का एक क्लिप लगा के बोला कि ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रम्प जब डोनाल्ड ट्रम्प दिल्ली में भारत में आएगा तब प्रोटेस्ट होगी। तो वही प्रोटेस्ट है जो दंगे की साजिश है। अब बात है अमित मालविया को तो हम मतलब पहले बोल देते कि सीरियसली नहीं लेते हैं, बट अभी तो उन्हीं को सीरियसली लेना पड़ता है कि एक नैरेटिव सेट हो गया। अब अमित मालविया का समझ में आता है, उनकी मजबूरी है, मतलब उनकी पार्टी है, उनका सरकार चल रहा है, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बकते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट वही अमित मालविया ने जो बोला वही चीज उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठा लिया, स्टोरीज रन किए गए एकदम, मतलब 3-4 दिन तक मीडिया में तो वैसे भी उमर छाया रहता है कभी कभी, तो वो हो गया कि दंगे की साजिश। इट वॉज नॉट अबाउट उमर, इट वॉज अबाउट दंगे की साजिश, कि डोनाल्ड ट्रम्प की प्रोटेस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प के सामने प्रोटेस्ट करने का ये जो कॉल दिया गया था यही था दंगे की साजिश। नाउ दिस, I know this sounds absurd to all of us, I know this sounds bizarre to all of us, but the thing is that set the ball rolling. And जो बात कॉलिन सर ने भी बताया और बाकी लोगों को भी बताया, why I am harping on this is that maybe earlier we could have just brushed this aside saying that like whatever, what nonsense is this, but then 3rd मार्च को ये अमित मालविया ने ट्वीट किया, 5th मार्च को दिल्ली पुलिस ने FIR 59 फाइल किया एंड रिपीटिंग व्हाट अमित मालविया सेड दैट उमर खालिद ने जगह जगह पे जाके ये स्पीच दिया, हालांकि एक ही जगह पे दिया था, और उसी के साथ दंगे की साजिश हो गई और उसी के साथ दंगा शुरू हो गया। सो द नैरेटिव नाउ द पुलिस stepped in and started speaking the same language as the internet head troll, right? So first the internet head troll, the head troll tweeted something, then the media picked it up, ran stories for 2 days, and then the police started saying the same thing. Now that is the point where we slipped into an abyss. मीडिया तक ठीक है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस भी वही एग्जैक्टली वही भाषा बोलने लगी, एंड द अब्यूज गॉट डीपर इन द मंथ्स, नेक्स्ट few months, when all the other students and activists, Gulfisha, Natasha Devangana, Miran, Asif, Shadab, Athar, Shifaur Rahman, Tahir Hussain, Khalid Saifi, Ishrat Jahan, all of them were arrested. All of them were arrested, and finally Umar was the last one to be arrested in that case. Now, why I said that we went deeper into the abyss is that the prosecution produced a 17,000-page charge sheet, now extending that fairy tale. So that fairy tale getting more and more legal is where we kept losing out on democracy. And democracy, the liquidation of democracy in front of our eyes. भीमा कोरेगांव में भी वही हुआ था, obviously, मतलब that's a even bigger, darker black hole where the stories got fancier and more nonsensical, but it kept getting the stamp of
the prosecution, the police. So पहले अब यही बात जो बाकी सारे लोग भी बहुत सारे कुछ मेंशन किए कि पहले जब हम लोग ये 2014 के बाद से ऐसा तो नहीं है कि हम अब उस तरीके से बोल सकते हैं सबके ऊपर मतलब we have all started self-censoring because earlier what happened that from 2014 to 19 we started learning to self-censor a lot of times about writing jokes, making jokes. Comedians started self-censoring before making jokes. Film writers started becoming more careful while writing dialogues, making scenes. Writers became careful while writing articles, everything. Because there were trolling, right? There were internet, there will be hordes of people who will come behind you and give you rape threats, death threats, and actually there will be attacks and there will be protests and your jobs will be under jeopardy. But post 2019, it's no more trolling. The trolling, if you have the wherewithal, you can still, ignore trolling. Go ahead with, उमर को भी तो कितना डेथ थ्रेट हर दिन आता था, वो बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होता था. But now it's no more trolling. It's now criminal cases are being filed against you. Everyone, if you speak out, if you speak your mind, whether you are a film star, whether you are a writer, now criminal cases are being filed. So that once again is our slipping into the abyss. That the trolls जो narrative set करता था, अब वो prosecution भी कर रहा है, अब वो law and order भी कर रहा है, right? But it's not like there is dearth of freedom of expression in this country. मतलब it's not like freedom of expression बहुत लोगों के पास बहुत है. हम तो वो भी देख रहे हैं, मतलब वो भी तो clearly देख रहे हैं कि लोग मुस्लिम जेनोसाइड का कॉल दे रहे हैं, लोग मतलब दंगे भड़काने का सीधा बात कर रहा है, लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं. मतलब रेप थ्रेट्स नहीं, मतलब हम रेप करेंगे ये ऐलान कर रहे हैं, पर उनके ऊपर कोई केस नहीं है. ये भी तो हम सीधा देख रहे हैं ना. तो so the thing is that the persecution is on us who stood for the constitution, who stood for democracy. It's very clear. Now, if I just focus a little on this particular case, the Delhi riots case. The Delhi riots case, like I said, the prosecution then continued with that fairy tale, okay? And that was to silence dissent. The media trial that was going on parallelly was to criminalize dissent. The level of the media trial was that when उमर के खिलाफ जब चार्जशीट दाखिल हुआ, हम लोगों को चार्जशीट नहीं मिला था, चार्जशीट हमारे लॉयर्स को नहीं मिला था, चार्जशीट कोर्ट में भी ऑफिशियली सबमिट नहीं हुआ था, मीडिया को मिल गया. मीडिया ने उससे स्टोरी चला दी, मतलब 2-3 दिन प्राइम टाइम चलता लगा. और प्राइम टाइम किसके ऊपर? Exactly what Colin sir pointed out, the police custody statements. Now those statements till now under UAPA also has no legal value, right? They don't have any legal evidential value. You cannot use that in the court of law. मतलब पुलिस के सामने कोई कुछ भी बोल सकता है, नहीं भी बोल के बहुत लोगों उसके ब्लैंक पेपर साइन करवा के भी उसके बाद बहुत कुछ भर दिया गया था उस पेपर्स में और वो चला गया था. Now, my point is that if you see that how we slipped into the abyss, the chronology, आप chronology जो समझे ना बाकी केसेस में, इसमें भी अगर देखें, पहले मीडिया शुरू कर दिया है कि ये देखिए इनके उमर खालिद और बाकी शर्जिल इमाम के खिलाफ मिला सबूत, और वो चला दिया, स्टोरीज चला दिया, स्टोरीज का एविडेंस था पुलिस कस्टडी में किया गया स्टेटमेंट जिसका कोई एविडेंस नहीं है. But we see how media sets the ball rolling. Now, gradually, even the prosecution and the judiciary might follow suit. We don't know. What Colin sir said that because we all remember, like आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता नहीं, हम भी छोटे थे जब पोटा इस देश में था. पोटा का यही चीज था पोटा में कि पोटा में
पुलिस कस्टडी में किए गए स्टेटमेंट्स वर वैलिड, and that was what made POTA draconian, and that was why there was a countrywide uproar against POTA. And when UAP is also a very very draconian law, but that one aspect of POTA is not part of UAP yet, right? But the way the media is now इसको उछाल रहा है, इसके बाद उसी दिशा में हम लोग बढ़ते रहे तो धीरे धीरे ये प्रोसिक्यूशन ने भी वो उसको मान लेगा और जुडिशरी भी मान सकता है. The point is that part, the prosecution and the judiciary slipping into the abyss. I think it's not definite yet. It's the struggle that's going on. There's a push and pull in our democracy. We are also pushing and pulling. You know, we are also this kind of meetings and our courage to speak up. ये सारे वेस्ट नहीं जाता है. ये ऐसा नहीं है कि हम एक दिन रूम में बैठ के बात करते हैं, आपस में बात करते हैं और खत्म हो जाता है. ये नहीं खत्म होता है. It reverberates. It reverberates to larger movement. This is how we had defeated POTA. This is how POTA was removed. And I completely believe, because if you see in the Delhi riots case also, last year itself, the judiciary passed, the High Court passed a very good judgment granting bail to 3 activists on the basis of merit. And there, it said, the High Court said that the line between protest and terrorist activity has been blurred by the prosecution and that is not acceptable. And it questioned, what is the crime? Show us the crime. वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया तो वो जजमेंट हम तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी लोग उसमें बड़ी अखिल गोगोई ने उसी जजमेंट को यूज करके अखिल गोगोई हैड आल्सो गॉटन बेल. सो it is our, you know, because we speak out, because we fight, because we resist, that also has an impact on the prosecution, on judiciary, because they do not fight it, they work in isolation. They are the part of this society. So if we do not give up, the judiciary will also not give up. But if we give up, then we cannot depend on the judiciary to fight fascism. That won't happen. If we fight fascism, a part of the judiciary will stand by us. Last एक ही बात में एक लास्ट बात बोलूँगी कि एक किसी ने बताया मुझे ये चार्जशीट जो 17,000 पेज का चार्जशीट था ये दिल्ली राइट्स केस में, तो किसी ने बोला मैं पूरा 17,000 पेज पढ़ा. बीच बीच में मुझे हंसी आ रहा था और बीच बीच में बहुत डर लग रहा था. तो मैंने बोला कि देखो डरना तो ऑप्शन है नहीं, हंस सकते हैं. मतलब if we all laugh at the ridiculousness and if we keep speaking, then they will be defeated and they will, and we'll have to walk with the idea that they will be defeated. सारे fascist forces defeated होते हुए हैं इतिहास में, ये भी जाएगा. बस हमें साइलेंस नहीं होना है, हमें चुप नहीं रहना है, बस इतना ही कहना. थैंक यू.